तो ये बेसिकली जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार के व्हाट टाइप ऑफ डेप्थ आई एम यूजिंग ओवर देयर। तो जनरली हम लोग आप लोगों को जो लॉग्स प्रोवाइड करते हैं वो मेजर डेप्थ्स में होते हैं, एमडीज में। अगर ये लोग को इंटरप्रिटेशन करूँ, कोई नहीं जानता कि यार के वेल तो डेविएटेड भी होता है भाई, इस चीज को सर सामने रखो बिल्कुल। ना। एक वेल सपोज मैं एक ले लेता हूँ, एक वेल है, उसकी टोटल रेजरवायर की थिकनेस है 100 मीटर, हम्म ठीक है, और उसको मैंने डेविएटेड किया है, वो उसका टॉप इनकाउंटर हुई लेट्स से 1300 मीटर पे, हम्म और एमडी पे उसकी टॉप इनकाउंटर हुई लेट्स सपोज 500 मीटर पे, हम्म ठीक है, और वेल जो टीडी है वो आप इसको 100 मीटर थिकनेस करें तो 1500 पे जाता है, हम्म और इसकी टीवीडी में मैं जाऊं तो वो मेरा 1900, सॉरी एमडी में जाऊं तो 1900 में जाता है। हम्म तो इसमें पेट्रोफिजिक्स जो मैं अप्लाई करूंगा विद रेफरेंस टू डेप्थ, वो एमडी ही सही रहेगी ना सर? इनिशियली आप एमडी करेंगे, लेकिन बाद में आप उन तमाम चीज़ों को टीवीडीज में कन्वर्ट कर देंगे। यार कि यार टीवीडी में देख लो भाई ये इतनी है। हाँ, अब वो ये तो ऑब्वियसली डेविएशन डाटा जब लोड करेंगे तो टीवीडी अगर में हो आपके जाएगा। पास डेविएशन डाटा होगा तो ठीक है, यस। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मली लोगों को ये रेफरेंसेस नहीं पता होते। वो बस एमडी में डेटा आया, स्टूडेंट्स इस तरह हमारे करते हैं यहाँ पर, एमडी में डेटा मिलता है, बस धड़ाधड़ किए जा रहे हैं सब कुछ, पता ही नहीं कि वेल डेविएटेड था भी कि नहीं था। ना ही उन्होंने जानने की कोशिश की कि हर ये वेल डेविएटेड है कि नहीं है। तो वो अब तो है अगर, ही। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि हाउ हाउ यू नोज दैट योर वेल इज डेविएटेड। डेफिनेटली यार, everything should be written in the end of well report। वेल कंप्लीशन जब आप, रिपोर्ट। यस, वेल कंप्लीशन रिपोर्ट या एंड ऑफ वेल रिपोर्ट, कुछ कंपनीज को वेल कंप्लीशन कहती हैं, कुछ इसको एंड ऑफ वेल कहती हैं। ठीक है। तो अब जब लॉगिंग समरी वहाँ अवेलेबल है तो वहाँ पे चेक शॉट का या सर्वे का डेटा भी उधर ही अवेलेबल होता है। तो भाई ये इसका एग्जैक्टली। सर्वे डेटा है, अब आप देख लोगे आपका वेल कैसे डेविएट हुआ है यहाँ पर। राइट। तो अब इन चीज सब चीज़ों को सामने रखते हुए आपको डेप्थ की करेक्शंस भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। तो भाई एमडी में तो मेरी जो 100 मीटर थिकनेस थी जिसकी एक्चुअल, वो एमडी में कवर करता हुआ उसने उसको 150 बना दिया है। अब 150 तो नहीं है मेरी थिकनेस एक्चुअल में, एक्चुअली मेरी थिकनेस तो 100 मीटर है। एग्जैक्टली। तो ये करेक्शन आपने अप्लाई करनी है ना, वरना आप क्या कर रहे हैं, आप कम इंटरवल को बड़ा करके बता रहे हैं, और बाद में पता चला कि जब वहाँ पे आपने लॉगिंग करने के बाद वहाँ पे जब टेस्टिंग करना स्टार्ट की है तो बोलेंगे भाई कैसा पेट्रोफिजिक्स ने क्या बताया हमें, ये तो कह रहा था इतने मीटर का इंटरवल है, ये तो इतना सा निकला। ठीक है Right? सर। So these understanding is very important while you are doing the petrophysics। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस डेप्थ मोड में काम कर रहा हूँ, और जब मैंने रिजल्ट्स देने हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस डेप्थ मोड में मुझसे मांगना चाह रहे हैं, ठीक है सर। और इनकी करेक्शन आप कैसे अप्लाई करेंगे, और ये सारा डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर। ऑल राइट। सो नाउ we are talking about the wireline logging। If you are on the rig side, and definitely before doing the interpretation you need to execute the logs while you are drilling the well। तो जब आप लॉगिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप तमाम लॉग्स इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशंस आप एग्जीक्यूट करते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज बेसिकली इज नोन एज द लॉग सूट। कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपने यूज किया है। different companies having different suite names and different technologies to drive the results, and the uh, and the devices that you are using uh, to measure these physical properties of the earth is known as the sound। So if I'm going to define the sound contains one or more measuring devices and the cartridge which contains electronic control and transmission circuitry। It means the sound having the two things. Number one, the devices that emit or that we are using to generate the physical properties of the rock, and second is the cartridge that is basically used to uh, uh, basically used to that contain the electronics control and the transmission. Because when I'm going to calculate or generate the results, then definitely I need to send this into the surface in the control panel to apply the processing. So this sound lowered into the hole by the armed steel cable and start the logging। Keep in mind that we always log any interval from bottom to top। हमेशा
जो लॉगिंग की जाती है वो बॉटम से टॉप की तरफ की जाती है, राइट? और जब हम लॉग्स को रीड करते हैं, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रीड द लॉग्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम, तो लॉगिंग वेल के अंदर बॉटम से टॉप की तरफ होगी, और जो हम रीडिंग करते हैं लॉग के रिजल्ट्स की या टू डू द पेट्रोफिजिकल एनालिसिस, वो हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं। ये रिवर्स प्रोसेस है इसका। So this sound is usually 5 by 8 inches in diameter and maybe up to several feet long. Now that depends how many different combinations you are using to make this sound. उसके बाद ये एक छोटा सा sketch है मेरे पास. It is showing simple process how to log any specific depth interval while you are after drilling the desired interval. कि आपने साउंड को लोअर किया वेल बोर के अंदर, बॉटम पे पहुंचाया उसको स्टील केबल के थ्रू, एंड देन स्टार्ट लॉगिंग फ्रॉम बॉटम टुवर्ड्स टॉप, और सरफेस के ऊपर वी हैव वन लॉगिंग यूनिट where we process all of the raw data coming from this sound and then generate the logs. तो यहाँ तक भाई हमने लॉगिंग का काम कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास लॉग हो गया, वट एवर जो भी लॉग्स से, अभी हम उनकी डिटेल में नहीं जा रहे। हमें ये चीज़ पता चल गई कि वेल साइड पे क्या हो रहा है और वहाँ पे किस तरह की डेप्थ्स यूज़ होती हैं, और उसके बाद जब लॉगिंग होगी तो उसका छोटा सा प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस के एग्जीक्यूट होने के बाद लॉग्स आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। Therefore, if you are going to describe the well logs, basically the well logs are the display of one or more logs measurements on a strip of paper or film with depth in one axis is called well logs. कि आपने इन तमाम लॉग्स को किसी पेपर फिल्म के ऊपर आपने डिस्प्ले कर दिया, या आज के दौर में आपने इसको किसी सॉफ्टवेयर में उस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, दिस इज नोन एज द वेल लॉग्स, कि जहाँ पे आपके पास मल्टीपल लॉग्स की मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियसली जब आप इसको पेपर के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर में इसको आप डिस्प्ले कर रहे हैं, देन डेफिनेटली you required a specific template where you can plot these logs. हर log को हर जगह पे आप plot नहीं कर सकते. If you are going to plot any log anywhere, it means sometimes you didn't get the actual results, whatever you want from the, or whatever you are going to interpret from the logs. Basically, I am talking about the log presentation. We have two basic tracks where we plot the logs. The first one is the linear scale. It means the grid we are using to display the log having equal distributions on the vertical line, on the horizontal lines, horizontal and vertical lines. Like if I'm going to draw on that, if I'm saying I'm going to display my log on the linear scale, it means I have a grid, and this grid have a certain scale. Like I'm talking about the gamma ray log. The scale is 0 to 150 to display this log. Now I'm going to divide this horizontal line into equal 10 divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is the 10th one. If you are saying that this is the linear scale, it means one vertical, the distance, whatever the distance, 15 points. Yeah, if you have the scale 0 to 150, then it means one vertical line is equal to the 15 API. Another, if you go into the second line, it means you are going to add 15 more, it is 30, then 45, then 50, and 75, and so on. It means that you have a constant number of value that you are going to add whenever you are going to move into the next
vertical line. So the linear scale are based on the addition. Linear scale normally having constant increment in values when you are going to move from one line to another. And the second type of track that you are using to display the log is the logarithmic scale. This scale is basically have different cycles, and every cycle having different spaces in between these lines. And the scale is basically moving on the basis of multiplication or on the basis of division. Like if I'm going to talking about the resistivity logs, the scale would start from 0.2 to 2000. So the one cycle, how I'm going to read this log, the starting from 0.2, the next line is 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. After the 9, you are getting the value of 1. Here is your one cycle is completed and the second cycle going to start. How? After 1, you are not going to read 1.1. After 1, you have to read 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and then 10. Here is you are going to complete the second cycle. After 10, you are enter into the third cycle. It means 10, and the next line would be 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Third cycle is completed. After the 100, you are going to enter into the fourth cycle. It is 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. And at 2000, your fourth cycle is completed and the logarithmic scale is completed. And the reason why we use linear scales and why we use a logarithmic scale, that is because some of the logs having very abrupt changes in the values due to the changes in lithology or due to the changes in the formation, the fluid which it has. If talking about the gamma ray log, the change in the values in between the 100 or in between the 0 to 150 means somewhere you get the values 130, 120, and somewhere you get the values 20, 30, 40. But if I'm talking about the resistivity logs, they have very infinite values, and at the same time they have very minute values like 0.2, 0.3, 0.4. At the same time, when you get into the second interval, you get the values 100, 200, 300. After some time, you get the values 1000, 2000. And again, back into the 0.2, 0.3, 0.4. The fluctuation of values in the resistivity log is very large. That's why it is very hard to display on the linear scale. So if you try to display these resistivity logs on the linear scale, then you didn't got any response on the log. That's why we are using the logarithmic scale to show the responses against each signal, each interval, or each facial changes in the formation, because simultaneous because they have very abrupt changes due to the change of mineralogy or due to the change of the fluid in any specific interval or in the formation. But while at the same time, the gamma ray or the SP log don't have the big changes on the values. So if I'm talking about the linear scale, it means we have different tracks to display the logs on my paper or film, all are in the linear scale. If I'm talking about the logarithmic scale, then it means I'm saying that the first track is in the linear and the second track is in the logarithmic scale. If you have the template for the multilinear scale, it means you have the track that's showing the 2 or 3 values at the same time. मतलब अगर आप मैं कह रहा हूँ gamma ray at any specific depth, gamma ray have only one value, maybe 120, maybe 130, maybe 100, maybe 10, maybe 20. Similarly, the resistivity logs at any specific depth only have the one values, maybe 0.2, maybe 0.3, maybe 100, maybe 200. But
if I'm talking about the dip meter data, this data having two different, not two, sometimes three different values at the same depth. Like if I'm going to say that uh, what will be the value for the dip meter data at 200 feet? Maybe at 200 feet for the gamma ray having only 20 value and the resistivity have 200 value. But the dip meter showing three values at a time. The first one, amount of dip. Second one, azimuth. Third one, the confidence rate. So the one point is basically showing the three values at the same time. That's why we use multilinear scales for these type of logs to display on it. All right. So basically we have linear and logarithmic scales and multilinear scales. Multilinear scales normally we are using to plot the dimeter data and tadpole logs, and linear and logarithmic scales we are going to plot the log one-dimensional logs. It may be the resistivity logs for the logarithmic scale and the gamma ray log for the linear scales. So anyone have any confusion in between the linear, logarithmic and multilinear scales? सर वो आपने एक डिप बताया था एजिमुथ, देखें, अब अगर मैं ये कहूँ ना कि भाई डिप मीटर डेटा को प्लॉट करो, ठीक है, यस तो सर, उसको हम कैसे प्लॉट करते हैं? तो आप सर एक मैग्नीट्यूड आ जाता है उसका जो हम डिप में प्लॉट करते हैं, जी, एक एजिमुथ होता है जो विद रेफरेंस टू नॉर्थ हमें बताता है, और थर्ड वन क्या था सर? एट एवरी डेप्थ पॉइंट के ऊपर क्या होगा, तीन चीजें उसकी होंगी. नंबर वन, अमाउंट ऑफ डिप, किस डिप के साथ वहां पे फॉर्मेशन के डिप वट जो भी है. सेकंड वन इज द एजिमुथ, जो कि एक स्मॉल सी लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड वन इसका कलर, कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस कितना है यार कि ये जो मैंने डेटा प्लॉट किया हुआ ये बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, मेरे जो लॉग के रिजल्ट हैं बेहतरीन है. तो होता क्या है, अब अगर मैं इसी स्केल को मैं ये चाहूँ कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने मल्टी लीनियर में प्लॉट करना है, अगेन ये क्या होगा, एक मेरे पास लीनियर स्केल होगा, लेकिन इसका स्केल जो होगा वो 0 से 190, ओ सॉरी 0 से 90. ऑल राइट. फर्स्ट मैंने क्या कहा कि भाई डिप मेटर डेटा में तीन चीजें होती हैं. नंबर वन डिप, नंबर टू एजिमुथ, नंबर थ्री कॉन्फिडेंस. ठीक है. अब 0 से 90 क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिप, कि आपकी फॉर्मेशन किस डिग्री के साथ डिप कर रही है. आई सेड इट इज 45, तो 45 आई थिंक यहाँ पे कहीं होगा. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सर्कल प्लॉट कर दिया. Amount of dip is different and the direction of dip is different. The direction of dip is basically known as the azimuth, कि भाई मेरी 20 डिग्री या 45 डिग्री की डिप तो है, लेकिन किस तरफ है, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स वेस्ट, कहाँ पर है. दिस इज नोन एज द azimuth. और जब भी हम मैप्स के ऊपर प्लॉट करते हैं तो ऑलवेज जो हमारे पास नॉर्थ होता है इट इज 0, ईस्ट 90, साउथ 180, वेस्ट 270, और अगेन जब हम नॉर्थ पे पहुंचते हैं हमारा सर्कल कंप्लीट होता है, इट इज 360 डिग्री. इफ आई एम सेइंग दैट माय azimuth is 75 degree, then it means it is in between northeast quarter. All right, so I need to draw a line that's showing my azimuth. So now with the help of this line you can read your azimuth, the direction of the dip of your specific formation. Two things you have plotted at the same point, and now the third one is the confidence. Generally we are showing the confidence with the help of the color code, red, blue and green. Red mean highly confident, blue moderate confident, green not sure, or you can change this legends as well. So three type of informations we are plotted on the same point. That's why we are using the multilinear scale track type to display
diameter, or tadpole logs. This type of information you cannot get from the gamma ray log or from the resistivity logs. So the min and max values for the gamma ray logs is very small. That's why we are using the linear log to show the responses. And the minimum and the maximum values for the resistivity log is very higher and very lower, starting from points, 0.2, zero point 0.3, or maybe 0.02, and moving till infinite. That's why we are using the resistivity scales to, the logarithmic scales to display the resistivity logs, because they have the very long variations in the values due to the formational changes. Anyone have question over there? No, sir. All right. So while I'm discussing about the wireline logging, I discussed that we are going to run a combination of logs at a one go. It means I'm talking about the log suites. So different services companies using different nomenclature for different log suites. Like if I'm saying that I'm running the suite LDL, CNL, GR, it means I'm saying that against this suit or this log, you will get the curves ρ, PEF, DRO, N5, and GR. In petrophysical interpretation, you always using the log suit names, not using the curve names. Curve, we are generally using the curve names while you are showing you or explaining you anything about the petrophysics. But whenever you are doing to the petrophysical interpretation, you need to use the log suit names. I'm saying that please give me the LDL, CNL, GR suit. It means I'm asking about the ROBI, PEF, and DRO and 5GR curves. If you are running anywhere BHC GR suit, then it means you will get the curves DT, sonic, gamma ray, and the SP. If you have the data for LDL suit, it means you only have the ROBI, PEF, and DRO. And you can see that in the first suit where we have LDL, CNL, and GR, it means three different devices is attached in this zone, and we get the results for the ROBI, PEF, DRO, N5, and GR. While at on the number third, I only have the LDL, it means I have the ROBI, PEF, and DRO, and I didn't get the results for N5 and GR in this suit. Similarly, if I'm going to say GR, it means I'm getting the gamma ray. If I'm saying I have the log suit for DLL, dual lateral log, it means I'm saying that I have the curves for LLD and LLS. LLD stands for lateral log deep, and LLS stands for lateral log shallow. These are basically the resistivity curves. And if I'm saying I have the DLL and MSFL, it means I have LLD, LLS, and MSFL curves. MSFL stands for microspherically focused logs. And similarly, DIL for dual induction log. And if I'm saying I have the DIL, then it means I have ILD and ILM. ILD stands for induction log deep, and ILM stands for induction log medium. And similarly, we have a lot of suits for your example listed over there. So this is our example wireline log. Whenever you're getting the log, you have these type of things. Template may be modified, but these type of informations available on any wireline log.
if you can see this log, we have different type of informations available over there, and we divided these informations in different blocks. The first block is basically known as the header area. In the header area, you can see the log suite name and the services company name and some basic information about the log. Like you can see, this log is executed by the Schlumberger electrical logs. It is the suite name and first reading and the last reading. It means where it is started and where it is end. Also, you can see that casing Q and the bottom depth and the density of mud you are using and the resistivity of mud. Sorry, not these. These are the informations and mileage. It is not clear for me. All right. So basically, the well header covers the basic general informations about the well name, company name, means sources company name, and the suite name, and from where it is started and from where it is end. And also, if you are in to the second or third interval, then it means you also need to know where your casing shoe applied. After that, you have the casing interval. After the log header area, you have the mud parameters block, where you get the information about the mud parameters. Like here is, you can see that the mud characters means your density, resistivity of mud, viscosity of mud, similar like that. So these are very old example logs. If you are going with the new, if you have any new example logs, then you will get more detailed things, but the division of the log is similar. Always you getting the well header on the top, where you get the basic information about the well and the suit and the company and the first reading and the last reading. And second block is for the mud parameters, where you get the basic attributes about the mud, which that is used while drilling the mud. And the third block is for remarks. Remarks is basically showing any ambiguity or any problem that is encountered during the well. It is always written over there. So it is, keep in mind that whenever you are going to start the interpretation, the first thing when you pick the log, go through from the header, mud parameters, and always go through from the remarks very clearly and very sharpली, या इसको कहेंगे बहुत गौर से आपने पढ़ना है इसमें कि what is written in that remark areas. And the reason is, if you have any ambiguity during the logging, it is written over there. Or services companies applied any type of correction on the logs, it is written over there. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, it means you doesn't know कि आपका लॉग ठीक है कि नहीं है, या किसी डेप्थ इंटरवल पे आपको कोई प्रॉब्लम आई थी या नहीं आई थी, या अगर आई थी तो उसके लिए उन्होंने क्या किया वहां पर. तो जब भी आप किसी भी लॉग की इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेल हेडर के ऊपर जाकर ये कौन सा सूट है और किस इंटरवल को आप रीड करने जा रहे हैं. एंड देन यू मस्ट गो थ्रू फ्रॉम द रीमार्क्स, कि आप रीमार्क्स को पढ़ें कि उसमें क्या मेंशन किया हुआ है. मे बी समथिंग रॉन्ग यू फाइंड इन दिस इंटरवल, तो वो उन्होंने यहाँ मेंशन की हुई होगी. तो जब आप उस इंटरवल पे इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट करेंगे, तो आप बहुत केयरफुल होंगे कि यार कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे इस लॉग से क्या चीज़ ड्राइव करनी चाहिए या ये चीज़ ड्राइव नहीं करनी चाहिए. आफ्टर दैट you got the logs, and on the top of the log you always getting the scale. Like you can see that in your first track you have the porosity log, and in the second track you have the resistivity log, and the porosity log you have the scales from not clear for me, but I think it is 0. I don't think so. What is written over here? And second track for the resistivity log, and again the scale is not readable for me because the image quality is not good. After the scales you have the logs, and go through from the logs and start your interpretation. So if I'm going to draw what type of things you have
in your log. This is my paper fill that I received from my services company. The first block is for the well header. Second block is for mud parameters. Third block is for remarks. After that, you got main log. Main log means where you put all of the information about the log, what you have logged in the respective interval against the suit. अब हो सकता है कि आपका जो मेन लॉग है ये 2000 फीट को या 100 फीट को या 100 मीटर्स को कवर कर रहा हो. From this entire 100 meters interval, वेल साइड के ऊपर जो जॉलजिस्ट होता है उसको पता होता है कि यार कि आउट ऑफ दीज 1000 दिस 20 200 और 100 मीटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लुक लाइक कि यहाँ पे लॉगिंग ठीक नहीं हुई. Then you need to run the repeat section. तो वहां पर फिर लॉगिंग सर्विसेज कंपनी क्या करती है, रिपीट सेक्शन एग्जीक्यूट करती है और दोबारा आपको वही इंटरवल फिर प्रोवाइड करती है. लाइक अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ यार कि ये हमारे पास 500 से स्टार्ट हो रहा था और 1500 पे एंड हो रहा है. इसमें 900 से 1100 जो है वो बहुत एक मेरा एक अच्छा जोन था जिसको मैं बहुत केयरफुल होकर देखना चाह रहा हूँ. एंड वेबसाइट आल्सो सेइंग दैट द लॉगिंग क्वालिटी इज नॉट गुड, यू नीड टू रन द रिपीट सेक्शन ओवर देयर. तो रिपीट सेक्शन में मेरे पास जो डेप्थ इंटरवल होगा वो 900 से लेकर 1100 तक का होगा. तो कोई भी आप हार्ड कॉपी उठाएं तो उसके अंदर आपको 5 डिवीजन में लॉग नजर आएगा. नंबर 1 एट द टॉप इज ऑलवेज द हेडर, then the mud parameters, then the remarks, then the main log, and at the end you got the repeat section. तो अगर आप रिजर्वायर जोन को ड्रिल कर रहे हैं और आपको पता है कि उसका रिपीट सेक्शन भी हुआ है तो आप मेन लॉग के साथ रिपीट सेक्शन को जरूर देखें. यार कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेन लॉग में प्रॉब्लम थी और रिपीट सेक्शन हुआ है इसके ऊपर, हो सकता है कि करेक्शन अप्लाई की हो. तो आपने रिपीट सेक्शन को जरूर देखना है कि ये किस एरिया में एग्जीक्यूट हुआ है. ठीक हो की बात. So we will continue from tomorrow to onward. यहाँ तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें. We have only 1 minute left to end the session. Anyone? No, sir. Thank you. सर सब कुछ क्लियर है. All right, guys. I will upload the lecture और कल फिर इंशाल्लाह इसके हिसाब से onward continue करते हैं. ठीक. Thank you guys. अल्लाह हाफिज. इंशाल्लाह सर. थैंक यू. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. सर अटेंडेंस लगवा दे. हो गई अटेंडेंस.